प्रदीप, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, क्योंकि हमने आपके वो रिपोर्ट्स देखे और चलाए जहां पर आप वो जाबाज लोगों से और नागरिकों से बातचीत कर रहे हैं जो वापस अपने देश लौटकर जो लड़ाई है उसमें शामिल होना चाहते हैं। अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, इजराइल के स्पिरिट की अगर बात करें तो उनके जज्बे जुनून को सलाम करने का मन करता है, क्योंकि हम जैसे ही एयरपोर्ट में जाते हैं, हम फ्लाइट में एंटर हुए तो हमने देखा कि बहुत सारे इजराइल के लोग थे जो वापस आ रहे थे अपने देश की, और कोई छुट्टियां मनाने के लिए गया था, कोई थाईलैंड गया था, और कुछ लोग तो वाराणसी में आए थे योगा सीखने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें जैसे ही लगा कि हमारे देश पे हमला हो चुका तो हमें लगा कि हमें वापस पहुंचना है। जैसे ही उन्हें फ्लाइट मिलती है, पहली फ्लाइट पकड़ के वो इजराइल आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने तो वॉलंटियर किया है कि हम जो सरहदी इलाके हैं वहां पर अपनी फौज के साथ शाना बशाना लड़ेंगे। और जो लोग उम्र में बड़े हैं, यानी कि 60 वर्ष के हैं और उससे ज्यादा है, उन्होंने कहा अगर हम लड़ नहीं सकते लेकिन हम वॉलंटियर करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके मदद करेंगे, खाना पहुंचाएंगे, सामग्री पहुंचाएंगे, या तो हम फिल्म बना के अपनी जो कहानी है दुनिया को सुनाएंगे कि किस तरीके से हमास के लोग हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से निहत्तों को उन्होंने मारा है। अपने देश की कहानी बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां की अगर बताएं स्थिति ओवरऑल तो बहुत ही टेंस है, क्योंकि जैसे ही हम कल एशकेलॉन के इलाके में गए, नॉर्मली क्या होता है कि वो गलत ना होगा कहना कि वो गोस्ट टाउन बन चुका है, कि अभी इस समय मैं बताता हूं कि टेल अवीव का इलाका भी अगर आप देखेंगे तो टेल अवीव में भी नॉर्मली बहुत रौनक रहती है, यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही जबरदस्त रहती है। कभी भी आप देखेंगे लोग यहाँ पे सड़कों पर आपको घूमते नजर आते हैं, लेकिन इस समय आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, कोई एक दुकान आपको खुली नजर आएगी। यही मंजर कल शाम 8 बजे से हम ऐसा ही देख रहे हैं। 8 बजे से यहाँ पे मतलब शहर पूरा बंद हो गया। एशकेलॉन की बात करें वो तो बिल्कुल ही बंद नजर आता है, सड़कें खाली कला नजर आती हैं, सिर्फ कुछ इक्का दुक्का कुछ गाड़ियां सिक्योरिटी की आपको नजर आती है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, क्योंकि जिनको भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है वो सिविलियन इलाके हैं। क्योंकि जिन जिस जगह पे हमने देखा कि रॉकेट गिरा, ना वहां कोई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन थी, ना वहां कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन थी, यानी कि वहां पे रॉकेट मारने का कोई मतलब नहीं बनता। हमास की तरफ से पूरी कोशिश है जितनी ज्यादा कैजुअल्टी इन्फ्लिक्ट की जाए। और हमने देखा है रिहायशी इलाकों में, प्रदीप, जो आप ग्राउंड रिपोर्ट्स भी जो भेज रहे थे, किस तरीके से लोग वहां बॉम्ब शेल्टर्स में आश्रय लेकर बैठे हुए हैं। अभी जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं टेल अवीव से, वहां अभी सुबह के 5:40 हो रहे हैं, तो सुबह सुबह का वहां वक्त है। लेकिन आज 5वां दिन हो जाएगा ये जंग फिलहाल जो जारी है इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच। बने रहिए हमारे साथ प्रदीप, आपकी ही ग्राउंड रिपोर्ट एक बार हम चला देते हैं। When it comes to Hamas needling Israel by firing back-to-back missiles in Ashkelon, or rocket shrapnel is now becoming a common sight in the area, prompting the citizens to seek refuge in safe rooms and in shelters in basement floors of the buildings. And the fear and the anxiety on their faces are palpable as they try to protect themselves and their loved ones from the ongoing danger. Take a look at this report that Pradeep has sent across. There's an outpost. Go to the ship. Once again, there is a sound of the siren, and you can see everybody from the journalistic community rushing towards the bomb shelter. And once again, there is a panic, and there seems to be no respite in pounding of rockets from Hamas side. It all started on Saturday morning at 6:30. Everybody woke up to the sound of the siren. And since then, we have seen that regularly the rockets are being pounded. And see, this is a shelter where the people hide themselves from the rockets being fired from Hamas side in Gaza. And you can see the elderly people, handicapped people, many of them, and even the journalists also right now. See, most of the people from the journalistic community, they're also here. There was a rocket attack earlier also. There was a very big attack at 5, and many Qassam rockets flew from Gaza, and they hit this hotel. Three different rockets fell here. The first in the front of the hotel, the second hit 4 steps away from our car. We were just we just went out to the car 10 seconds before, and we were getting in the hotel, and we were also reached from the shrapnels, and this is a piece of the Qassam which hit very close to our car.
See, this is the piece of the shrapnel this press TV journalist is holding in his hand. This is basically the one that hit their car. Many of them had a narrow escape. When we talk about any kind of a conflict, one thing can be rightly said. Uncertainty is the only certainty, and that's exactly what is happening here. And just short while back, there was a rocket explosion because journalists from the international community, they are putting up here. And that's one of the reasons it seems that they are trying to target them also. They want to silence their voice. They do not want anybody to hear the Israel side of the story because they want to run with the fake narrative. Here you can see kids, these young babies sitting here inside the bomb shelter. 2-year-old girl. Now the question arises, what has been their fault? Why these 2 years girl, this young baby or this young boy, why they have to hide inside the shelter? This is the question asking because she's too young even to understand nitty-gritty of the conflict between Israel and Palestine. So this is the question the mother must be asking. You feel very bad the way they have taken people hostage? Yes. I'm very scared. And worrying in here, but we gone in here in last night after last night. So they have fled from their home. Since last night they are putting up here. This young kid hardly understands anything about the conflict between Israel and Palestine. This young boy, he hardly has an understanding about the nitty-gritty of the ongoing conflict. So what has been their fault? Why they are made to flee from their homes? Why these people are being targeted? Many of them had been held hostage, women, children. And Hamas has started threatening because they are trying to use hostage as a bargaining chip. They have started threatening that in case you are not going to stop pounding of shells or bombardment in Gaza area, they will start killing all those people who have been held captive.